We are live now, sir. Thank you. On behalf of Educating, मैं सीए अरुण छाजेड़ श्री सीए बिमल जैन सर का हार्दिक स्वागत करता हूं एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म पर। और सच में सर मैं आज बता नहीं सकता कि हमारे लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि जो हम जिनको जीएसटी देख के सुन के हमने स्टार्ट किया था जीएसटी में अपना करियर, आज वो हमारे साथ है और वो भी स्पेशल डे जीएसटी गुरु ऑन द Guru Day, that is the Teachers Day. So that is a very pleasant moment for all of us. And thanking to each and every participant. I'll start with the brief introduction of the sir. मैं सभी की तरफ से मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं सर कि मुझे आपका इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, बट एज ए कर्टसी, एज ए प्रोसेस, मैं आपके बारे में ब्रीफ बैकग्राउंड शेयर करता हूं सभी मेंबर्स को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इन May 94 कंपनी सेक्रेटरी इन December 2006 एंड हैविंग एंड बैचलर डिग्री इन द लॉज। सर having the more than 21 year of experience in the indirect taxation and specialized in all aspect of the GST, service tax, VAT, CST, central excise, custom, foreign trade policy, special economic zone, EOU, export import law. Sir is presently the executive consultant of A to Z Tax Corp LLP, a boutique indirect tax firm, जैसा कि हम सभी जानते हैं। Regarding the professional membership, sir is the mentor of the indirect tax committee of the PhD Chamber of Commerce, chairman of the corporate advisory committee of the IPM group of the institute, member of the indirect tax committee of ASSOCHAM FICCI, special invitee of indirect tax committee of ICAI ICSI, members of eminent faculty in the indirect tax committee of ICAI ICSI ICMA. With respect to the award and recognitions, sir was the keynote speaker at Guinness World Record made by the ICSI in the largest taxation lesson on the GST, which has been attended by 4,500 plus participants and breaking the earlier record held by the Japan. Excellent, sir. Business Leader Award from the MIT School, Noida. Best Speaker Award from the NIRC, ICAI, ICWAI. Young Achiever Award at Igniting Minds 2015. Best Participant Award in MSOP 117 batch by ICSI. मैं सभी प्रोफेशनल मेंबर की तरफ से, सभी स्टूडेंट की तरफ से सर को हैप्पी टीचर्स डे और गुरुजी को प्रणाम बोलता हूं। और मैं आपको हैंड ओवर करता हूं सर प्लेटफॉर्म, स्टार्टिंग विद मोटिवेशनल स्टोरी जो हम रियली सुनना चाहते हैं, उसके बाद एज यूजुअल सर जैसा आप चाहेंगे। Okay, all right. Thank you, Arun ji, for a lovely introduction, and thank you, Pooja ji, being a co-panelist today. It's my proud privilege. I'm here with all distinguished members, professional colleagues across Pan India. So, good evening to all of you and happy Teachers Day. What is the importance of this day today? Who is teacher? Only a senior teacher? नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। मैं तो एक चीज जानता हूं, जो आपको सिखाए वो टीचर है। वो छोटा बच्चा भी हो सकता है जो आपको सिखाए, और जिससे हम कुछ भी सीखें, चाहे वो कोई भी हो, मेरे हिसाब से वही टीचर है। और सबसे बड़ा टीचर तो प्रभु हैं, जिनने हमें जन्म दिया और हम इस मनुष्य जन्म में हम आए। हम सब जानते हैं यथावत कि हम आए हैं और हम जाएंगे एक दिन, तो हमें कुछ यूनिक, अच्छा और स्पेशल करके जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? फॉर सिंपल रीजन, हम आज हैं लेकिन कल हमारी याद कैसे की जाएगी, ये हमारे काम से, हमारे कर्म से, हमारी एक्टिविटीज से, हमने क्या किया, उससे लोग जानेंगे। देखिए कितने लोग आए और कितने लोग चले जाते हैं,
और फिर कितने लोग आते हैं और फिर कितने लोग चले जाते हैं। स्टोरी ऐसे ही चल रही है। आज एक कितना अच्छा दिन है जिस दिन हम अपने जिन टीचर्स से हमने सब कुछ सीखा, हम इस लायक बने कि हम भी कुछ बोल पाए, हम भी कुछ कह पाए, हमारे अंदर भी वो गुण, वो एक्सीलेंसी, वो कैपेबिलिटीज, वो क्वालिफिकेशन, वो डिग्री। कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैंने मेहनत की, मैं तो ये सोचता हूँ नहीं, ये गुरु ना होते शायद हम कुछ ना होते। गुरु ने ही हमको सब कुछ सिखाया। कई बार मैं गुरु में उन सबको डालता हूँ, इवन आप भी मेरे गुरु हैं, जो मुझे देख रहे हैं वो भी मेरे गुरु हैं। क्यों गुरु है मालूम है? अगर आप प्यार ना करते, प्यार गुरु ही तो करता है। इतना स्नेह कौन करता है? इतना लव एंड अफेक्शन कौन पास ऑन करता है? और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कौन देगा? जो मेरा साथी होगा, मेरा गुरु होगा, वही देगा ना। एक गुरु हमेशा स्नेह प्यार से ही बात करता है। तो आप सब आज की डेट में मेरे लिए गुरु हैं। मैं तो यही मान के चलता हूं, क्योंकि आपके वर्ड, आपकी मोटिवेशन और जो आप चाहते हैं कि मुझे करना चाहिए, गुरु भी तो यही चाहता है कि मुझे ये करना चाहिए। आप भी तो यही चाहते हैं। कई बार आप लाइक करते हैं कि मैंने कोई काम किया, बहुत अच्छा किया, आप अप्रिशिएट भी करते हैं, फेसबुक पे लाइक भेजते हैं, मेरे यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट करते हैं। कई बार आपको लगता है कि अच्छा नहीं किया, हो सकता है, बिल्कुल गलती हो सकती है मेरे से, तो आप ही तो हैं जो मुझे बताते हैं। मैं देखिए एक चीज बताऊं, कल किसी ने मेरा एक फेसबुक अकाउंट, फेक अकाउंट बना लिया, मेरा फोटो डाल दिया, मेरी फोटो डाल के उसने फेक अकाउंट क्रिएट कर लिया और अराउंड उसने 500 लोगों को इनविटेशन एड फ्रेंड की रिक्वेस्ट भी डाल दी। तभी मेरे पास रात को एक किसी बंदे का कैलकाटा से फोन आया। उसने कहा सर मुझे लगता है आपका किसी ने फेक अकाउंट बना लिया है। तो उसके कहने पे मैंने एक्ट किया। तो अब आप देखिए, अगर रात को कोई आपको इतना माइन्यूटली वॉच कर रहा है, ये एक टीचर्स के बिना और कोई नहीं हो सकता। तो आप सब आज के दिन मेरी तरफ से, मैं तो ये मानता हूं आप हैं और आपकी वजह से ही मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं और हमेशा चाहता हूं कि आपका प्यार बना रहे और हम आप ही के प्यार, लव एंड अफेक्शन से आगे बढ़ेंगे। चूंकि अरुण जी ने मुझसे कह दिया है कि कुछ एक स्टोरी भी मुझे सुनानी है, आई थिंक हिंदी में चलेगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। पार्टिसिपेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि हाँ ठीक चल रहा है, हिंदी भी चलेगा और हिंदी से भी हम समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक आप अपने मदर टंग में ना बोले तब तक वो मजा नहीं आता। मतलब कोई स्टोरी बिना मदर टंग के मजा नहीं आती। तो मैं ये चाहता हूँ। कमेंट विजिबल है सर आपको? हाँ कमेंट विजिबल है। ऑलराइट, मुझे दिख रहे हैं। देखिए छोटी सी स्टोरी से मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टोरी बहुत छोटी है पर बहुत इसमें यू विल गेट ए रे ऑफ होप कि हम ऑलवेज अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। जिनने देख ली है वो तो अच्छी बात है, जिनने नहीं देखी है उनके लिए मैं करता हूँ। अभी एक रीसेंट स्टोरी मैंने अपने माय यूट्यूब चैनल पे डाली थी, मोटिवेशन सीरीज में, वेरी रीसेंट स्टोरी थी। अब वो स्टोरी मैं सुना के आज स्टार्ट करता हूं, फिर जीएसटी का टॉपिक हम लेंगे आपसे। तो देखिए, एक ड्राइवर को मैंने फोन किया, सुबह मुझे एयरपोर्ट जाना था, तो मैंने उसे फोन किया। मैंने कहा भाई 5 बजे पे आप घर पे आ जाना और मुझे ड्रॉप कर देना, मेरी फ्लाइट है 6:30 बजे की। अब देखिए मैं स्टोरी को रिलेट करूंगा हमारे प्रोफेशन के साथ। हम आज की डेट में क्या करते हैं और हमारे प्रोफेशन में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, मैं इससे रिलेट भी करूंगा आपको। अब वो टीचर जो ड्राइवर था वो सुबह 5 बजे पे आ गया। मैं गाड़ी में बैठा और हमने एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। ड्राइवर अब थोड़ी देर चलने के बाद मुझसे कहता है सर अगर आप कोई गाना सुनना चाहें, कोई बैंड आपका जो आपको लाइकिंग में हो आप बताएं, मैं वो बैंड लगा देता हूं। मैंने कहा नहीं रहने दो, कोई बैंड नहीं लगाना, रहने दो। फिर कुछ देर बाद ड्राइवर कहता है सर मैंने वो आपकी सीट के पीछे न्यूज़पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर आज के रखे हुए, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मैं सोच ही रहा था सुबह 5 बजे के वक्त मैंने इसे बुलाया है और ये हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर भी साथ लेके आया है।
कुछ देर बाद फिर उसने कहा सर पीछे मैंने मिनरल वाटर बोतल और जूस भी रखा हुआ है, अगर आपको लेना हो तो आप जरूर लीजिएगा। तो मुझसे रहा नहीं गया कि ये ड्राइवर एक तो प्रॉम्प्ट, उसकी गाड़ी इतनी क्लीन थी, साफ थी, हाइजीनिक थी, न्यूज़पेपर उसने रख रखा था, मिनरल वाटर बोतल एंड जूस भी रखा हुआ था। वो जो उसका फेयर है वही लेगा जो उसका नॉर्मल फेयर है। मैंने उससे पूछ ही लिया, मैंने उससे कहा कि भाई ये सारा अरेंजमेंट तुमने क्यों कर रखा है, क्या रीजन है, क्यों कर रखा है? कि तुमने गाने के लिए भी मुझसे पूछा, न्यूज़पेपर भी अवेलेबल है, जूस और मिनरल वाटर बोतल भी अवेलेबल है। तो ड्राइवर ने क्या उत्तर दिया? ड्राइवर ने कहा सर मैं ये सारी चीजें इसलिए करता हूं कि मुझे आप डिफरेंट तरीके से जाने। ऐसे कई ड्राइवर होंगे और ऐसी कई गाड़ियां होंगी जिसमें आप जाते होंगे, उठते होंगे, बैठते होंगे। अगर मैं अपने सेम सिचुएशन में कोई चीज डिफरेंटली ना करूं, यूनिकली ना करूं, जो स्पेशल हो, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सके, आप मुझे कैसे जानेंगे? तो उसने अपना एग्जाम्पल बताया, सर मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी हुआ करती थी, वो भी मैंने लोन पे ली थी। मैंने जब कस्टमर को कस्टमाइज सर्विसेज देना स्टार्ट किया, कस्टमर मुझसे बहुत खुश होने लगे। तो वो मेरा फोन नंबर ले लेते थे और जब भी उन्हें गाड़ी चाहिए होती थी वो मुझे ही बुलाते थे। आज उस एक गाड़ी जो मेरे पास लोन पे थी, आज मेरे पास 20 गाड़ियां हैं, 20 ड्राइवर हैं। सर मैं तो ये कोशिश करता हूं जिस काम में हूं उस काम को अच्छी तरह से करूं, क्वालिटी के साथ करूं, कुछ उसमें डिफरेंस जिससे आप ये जान सकें कि औरों में और मुझ में क्या डिफरेंस है, स्पेशलाइजेशन क्या है, यूनिक क्या है। अब इस कहानी को मैं कोरिलेट करता हूं हमारे प्रोफेशन के साथ। आज हम भी तो हैं, आज आप सभी अरुण जी को और मुझे दोनों बोल रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। आप सब कह रहे हैं अरुण जी और मुझे ही क्यों, आप क्यों नहीं है टीचर्स डे? आप टीचर्स के लेवल पे क्यों नहीं है? मैं तो कह रहा हूं कि आप टीचर्स हैं मेरे लिए। मैंने जो पाया है आपसे पाया है। देखिए कई बार हमें अपने प्रोफेशन में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो हम खुद अपनी प्रैक्टिस करते हो, आज इतने सारे स्पीकर्स हैं जो आपके सामने आते हैं, मैं भी एक छोटा सा स्पीकर आपके सामने हूं। आप सबको कैसे जज करते हैं? सबके लिए आपके क्या पैरामीटर हैं? अब मैं बोलता जाऊं कोई फायदे का नहीं है। आप जज करते हैं कौन आपके दिल में उतरता है, कौन आपके हिसाब से आपको सेटिस्फाई करता है। क्या हमारे प्रोफेशन में हम जहां प्रैक्टिस करते हैं या जहां काम करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम कुछ यूनिक बने, कुछ स्पेशल बने, लोगों के बीच जो सब सिमिलर सिचुएशन में काम कर रहे हैं, लोग मुझे डिफरेंटली जाने, लोग मुझे डिफरेंटली याद करें और लोग डिफरेंशिएट करें, यार बिमल अलग है, यार अरुण अलग है। क्यों अलग है? अरुण के नाम की वजह से अलग नहीं है या बिमल के नाम की वजह से अलग नहीं है, वो कुछ ऐसा करते हैं जो डिफरेंट है। तो मैंने आपसे क्या कहा, हम इस दुनिया में आए हैं और हम इस दुनिया से जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि रहते हुए तो लोग याद करें ही करें, लेकिन जाने के बाद लोग याद करें कि वो ऐसा था, उसके काम ऐसे थे। आपका नाम आपके काम के साथ जाना जाएगा। मैं तो यही आपसे बोलूंगा, देखिए आज टीचर्स डे के दिन ग्रीटिंग देने की बजाय आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। मैंने अपने आप को बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया, मैं रोज करता हूं, विश्वास मानिए। मेरे पास मेरी जो टीम है, मैं कभी कोई जीएसटी प्रेजेंटेशन दे दी मैंने, और देने के बाद मैं अपनी टीम से पूछता हूं कि दोस्तों बताओ मेरे प्रेजेंटेशन में कहीं पे कोई कमी नजर आई आपको? अब वो टीम कैसी है? यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, यंग कॉस्ट अकाउंटेंट, यंग लॉयर्स, आप जैसे सारे फ्रेंड हैं। उनसे पूछता हूं कि आपको कोई कमी नजर आई? क्यों पूछता हूं? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छा हो, फिर भी हो सकता है ना कमी रह जाए। हमें ऑलवेज अपने प्रोफेशन में ये देखना चाहिए कि मेरी वर्थ जो मैं करता हूं उससे आकी जाएगी, मेरे नाम से नहीं आकी जाएगी। लेट्स ट्राई, हम सब मिलके कुछ यूनिक डिफरेंट करने की कोशिश करें। मे बी हम आज प्लीज करें कि अगले टीचर्स डे पे मेरे लिए टारगेट ये है,
मैं ये करना चाहूंगा, ये मेरा टेक होगा। आप अपने आप में प्लीज करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सर को बताना है, बिमल जी को बताना है या अरुण जी को बताना है, तो हमें बता दें 1 साल में हम क्या बनना चाहते हैं। मेरे भी एम है, मैंने भी अपना एम्बिशन बना रखा है, मैंने भी क्राइटेरिया बना रखे हैं, कैरियर पर्सपेक्टिव बना रखा है। मैं तो यही चाहूंगा कि किसी अच्छे ओकेजन को आप टारगेट के लिए डिटरमाइन कीजिए। सोचिए कि अब आने वाले साल तक मैं कहां पहुंचूंगा। अभी तो कोविड-19 चल रहा है, टफ है, बहुत से लोगों के पास वर्क वाइज भी बहुत डाउनफॉल आया है, कई एम्प्लॉयमेंट में लोगों की नौकरियां भी गई हैं, हमें फीस का रिडक्शन भी करना पड़ा है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इन्हीं के बीच तो उभर के निकलना है, इन्हीं के बीच तो कुछ अलग करके दिखाना है। लेट्स प्लीज विल डू समथिंग डिफरेंट, जहां हमें लोग हमारी कार्य की वजह से जानेंगे। मेरे ख्याल से मोटिवेशनल में मैंने सोचा इतना ही मैं आपको अपने साथ लेके चलूं, जिसमें आप और मैं दोनों एक दूसरे को समझ पाएं और हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। अब मैं आज के जीएसटी टॉपिक पे आता हूं। अरुण जी ने एक ब्रॉडर टॉपिक बना दिया है मेरे लिए कि ये ब्रॉडर टॉपिक है सर, इस ब्रॉडर टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है, और 1 घंटे का टाइम मुझे सेट किया गया था। 15 मिनट तो मैंने हैप्पी टीचर्स डे पे ही बोल दिया कि टीचर्स डे पे हमारी टेक क्या होनी चाहिए। होप 15 मिनट हमारे जस्टिफाइड रहे होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा। कुछ जीएसटी से हट के मैंने बताने की कोशिश की, जो आपको लगा होगा कि बाकी इट इज समथिंग गुड विच वी मस्ट लर्न एंड डू इन आवर लाइफ एंड कैरियर। अब अरुण जी से ही मैं पूछना चाहूंगा, अरुण जी आप बताओ, मैं किस टॉपिक पे, क्या टॉपिक आप मुझसे चाहते हो जीएसटी में? आपको जो टॉपिक पूछना हो, जो आपकी समझ में आता हो, आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे बोलूंगा आज। मैंने तो ये सोचा था कि सर सबसे पहले मोटिवेशन स्टोरी 15 मिनट नहीं सर, मुझे ये लगता है कि हमारी 1 साल के लिए पाथ डिटर्मिनेशन स्टोरी है सर। हमें कुछ ऐसा मिला है जिसमें हम सोचेंगे अपने आप के लिए, और शायद कहीं ना कहीं माइंड में कभी ना कभी जरूर आएगा कि नेक्स्ट टीचर डे के लिए हमें विमल सर ने जैसा कहा कि हमें कुछ ना कुछ अपने अंदर अपने आप को प्रूव करके डिफरेंट करना है। रिगार्डिंग द टॉपिक सर, रिगार्डिंग द टॉपिक आई शुड से जीएसटी ऑडिट में क्रिटिकल एस्पेक्ट की मैं चाहता हूं कि सर जैसे अगर मैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं किसी की ऑडिट कर रहा हूं या मैं एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा हूं, क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो मुझे नॉर्मली मिलेगी और बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई शुड अवॉइड एंड विच आई शुड राइट इन माय ऑडिट कमेंट टू सेव माय साइड। सो ये मेरा है, बाकी सर जैसा आपको उचित लगे बीइंग ए गाइडेंस। चलिए मैं फिर पिक करता हूं अपना टॉपिक। ठीक सर। देखिए, जीएसटी ऑडिट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स टू वाइडर ए टॉपिक। अब कैसे करना है? देखिए, जब आप जीएसटी ऑडिट असाइनमेंट लें, सबसे पहले मेरा गाइडेंस आपको होगा, डोंट ट्रीट जीएसटी ऑडिट एज ए सर्टिफिकेशन वर्क कि थप्पा लगाना है और साइन करना है, नहीं, you should not take as a certification work. For me, GST audit is diagnostic review, health check, complete health check from GST perspective. I always say that once you do justified work in GST audit, you are building long-term relationship with the client. I can tell you number of examples. Maybe client has taken a call or he is being guided by some other professional, which is not correct. But when you're undertaking GST audit, you should make sure that you are doing this from complete diagnostic perspective. I'm picking up some of the example which you'd be liking, and that would be very interesting. Let me start with one example. One client came up to me, and client said, sir, I'm dealing in tea, chai patti, which is chargeable at the rate of 5%. Now, his simple question was, sir, I just want to ask one simple question. That is what the client posed before me. And whenever client comes in GST, they always start with that they are having simple question, but they do not know to what level complex and complexity involved in the question asked. What he's asking, I'm posting to all of you. He says, sir, that with 1 kg tea bag,
I'm giving 10 rupees biscuit free. So 1 kg tea bag of 500 rupees, let's assume. I'm giving 10 rupees biscuit free. Tell me whether credit of GST paid on biscuit is available to me or not. This was the simple question posted to me. And he came very recently, 17-18 audit is being done. And he was asking this question to me. I said, you're coming after almost 2.5 years. Why are you coming and checking out whether credit is available or not? So let me, tell you the provision, and then I will ask in a chat box from all of you, what is your take, credit available or not? So maybe before I start telling you the background provision, tell me whether GST paid on this 10 rupees biscuit, which is given free of cost with 1 kg bag of tea and tea chargeable at the rate of 5%, whether credit would be available. Tell me in a chat box. I'd be looking your answer so that I will get a clarity that this credit is available or not. Please tell me, credit is available or not. Maybe there's a time lag. That's the reason I could not see your chat coming so promptly, but you can write down in the chat box whether credit available on biscuit or not. Now, this question looks from one side very easy, but it has got complex and complexity. And the problems are, let me tell you. I said, dear friend, what is the credit amount involved on the biscuit which you are referring to? He simply said, sir, around 2-3 crore rupees. Then I asked him how much the tea sell, how much tea you have sold in a particular one financial year. He talked about 400 to 450 crore rupees per year turnover. So his question was simply for getting credit on biscuit, total business of 450 crore. I do not know what is your answer, but I'm getting now somebody has started saying credit available, somebody saying credit not available. Now let's look at the answer which I gave to him. I said, my dear friend, this credit would be available to you, provided. And what is this provided? Listen very carefully. I said, when you're giving biscuit free with the tea and a single price, it is falling within the definition of mixed supply, not naturally bundled, and sold under single price. And that would be taxable at the highest rate of that combo. And this biscuit was taxable at the rate of 18%, whereas tea was taxable at the rate of 5%. So I said, credit is available, no denial. But then you have to pay GST at the rate of 18%, which I'm sure you haven't paid. You have discharged GST at the rate of 5% only. He got amazed. He asked, how come this biscuit I'm giving free, then why you're saying that 18%? I said there's a concept called composite supply and mixed supply. It is falling under mixed supply. Combo would be taxable at the highest rate, 18%. If you discharge at 18%, then you can avail credit. And look at this biscuit, only 10 rupees, that too going free of cost. But he has made wrong decision. Now he's ending up in a position what to be done. So next counter question coming from his side, sir, I have availed the credit already in 17-18, and now we are finalizing GSTR 9 and 9C for 18-19. What is your advice? What should I do? Shall I avail credit? I said, of course, credit is available. I'm not saying no, but then you have to discharge GST at the rate of 18%. So differential 18% versus 5% will come into the picture. Then what happened? What happened then? So differential need to be paid, and that too along with interest. And that I'm sure you will not be liking and interested to do that.
So what is the way forward? Third question. He came only to ask whether credit available or not. Third question, and then top up. Sir, what should I do? I said, boss, advisable is you should reverse this credit on biscuit. To my mind, it is mixed supply sold under single price, two or more supply under single price, not naturally bundled, highest rate applicable. You should reverse the credit. Then another counter question comes. Sir, I have utilized the same. What should I do? I said, boss, advisable is you should reverse. If you have utilized, then interest is chargeable at the rate of 18%. Then at the last, this businessman who came only for taking opinion, he started telling me, sir, I thought of taking just one simple opinion. You said that you will charge only 30,000 for hourly discussion. But after talking to you, it looks like to me that I need to open up. I need to tell you my total business because I do not want to get into a big trouble, big mess. Then he's opening up and started sounding to me. Sir, it is not only biscuit which I'm referring to. Sometime with the 5 kg of tea bag, I'm giving a stainless steel plate, glass, bowl, different kind of gift item I'm offering to my customer under single price. If you pick up 5 kg, this gift will go. If you pick up 10 kg, this gift will go. And that is how my business is going on. Now, having said all this thing, what is now coming to your mind? And you'd be amazed. This guy is now telling me, sir, I only came for taking opinion, but now looks like to me I should give up and sow my business and look forward. You should really do some redesigning of my business model so that tomorrow no complication, and you kindly correct my all past transaction, whatever required. So one opinion converted into complete diagnostic review with filing of 9 and 9C. What is the price we are getting in the market for 9 and 9C? I'm sure a lot of participants are there. They will start saying that, sir, we are only charging certification charges. Don't do that. Now we are taking onus and responsibility. Please do something different, distinct, and unique. As per the story said for the driver which he's preparing in same situation. There are lot many driver, lot many taxi available. Similarly, lot many chartered accountant, lot many cost accountant available. Why you are different? That is your price. That is your premium. And this customer who came only for opinion gave whole business scenario to me. As a conclusion, what I said to him, as a redesigning a business model, I said that, boss, whenever you are doing this transaction, gifting of any item with your main product, you make sure that GST rate on gift items should not be more than 5%. Should not be more than 5%. Because his main product was chargeable at 5% rate. So he asked what all product I can pick up. I say you choose any item under 5% slab or 3% slab, silver coin, gold coin, 3% slab, depending on the milestone achieved. You can offer that. That combo of mixed supply would be taxable at the higher rate, which is the T GST rate 5%. You can do business, and then if it is mixed supply, going under mixed supply, credit is available even on gift item. So redesigning of this business with the credit available, that's what I suggested to him. Now looks forward from your side. Please tell me, I'm asking all the participants whether this case study which I discussed, you got it. If you got it, say yes, you got it. So that I will get a feeler, yes, you are really, creating synergy with my deliberation and we are going together. Then I will touch base another component of looking into GST audit. Please tell me in a chat box which should be giving an idea to me that you have got what I deliberated for the first case study. Yes, please.
So maybe time lag, it will come little later, but I'm going forward. See, second part of the story. Whenever we are doing a GST audit, there's certain common thing which is happening, and this common thing where we are struggling also. So let me take some common thing pertaining to outward supply and pertaining to ITC, input tax credit. It is a common part which is happening, and you all are looking for the answer. So let me do that part which you will love to listen that one. Let's look at on outward supply. I will pick up two components. We are filing GSTR 9 and 9C for 18-19. Last date is 30th September 2020. We all know that if a registered person having aggregate turnover less than 2 crore, GSTR 9 is optional. 2 crore to 5 crore, compulsory filing of GSTR 9, which is annual return. GST audit for this 18-19 is required only when aggregate turnover is more than 5 crore. This is what the provision as on date. Now, I'm doing certain case study pertaining to outward supply and pertaining to GST ITC credit, which you can guide your client and you can correct the transaction. Let me start with the first one. There is a book turnover 100 rupees. Just listen very carefully. Book turnover 100 rupees. You are filing GSTR 1 and GSTR 3B. Am I right? There are situations and circumstances that you may have made mistake, either correctly reporting the transaction in GSTR 1 or GSTR 3B. So let me take the example that you have correctly picked up turnover 100 rupees in GSTR 1. So book turnover 100, GSTR 1 turnover 100, but you made mistake picking up turnover in GSTR 3B. So two situations, either you have picked up 80 rupees as your turnover in GSTR 3B or 120 rupees. Had it been 100, then it is match, book GSTR 1 and 3B. Now we have to do reconciliation part. As an auditor, it is our responsibility that we must do this reconciliation part. So when I'm doing reconciliation part, I'm going to ask you also, and you can also reply within yourself. I will carry on with my discussion. You can reply within yourself what is the correct situation. My table 4 of GSTR 9 going to be auto-populated with GSTR 1. So correct numbers are being picked up in GSTR 9 table 4. And table 9, which is tax paid, is auto-populated from GSTR 3B. So in first case, you have shown 80 rupees in 3B. So taxes paid on 80 rupees getting auto-populated in table 9 of GSTR 9. But 100 rupees is coming in GSTR 1, auto-populated in table 4. So tax payable is coming on 100 rupees, but tax paid on 80 rupees. So what happened in this case? What you need to do? You need to make sure that differential tax, which is to be paid on 20 rupees, shortfall, which is not shown in 3B, need to be paid by DRC03, along with interest, because for delayed period, at the rate of 18%. Whether on net tax versus gross tax, dispute is going on. Notification 63/2020 has come saying prospectively from September 1, 2020, but to my submission, and later on next day they have issued the press release, you should pay on net tax liability interest. This is the part story 1. Part story 2, if it is being shown 120 in 3B, then what happened? Tax paid in table 9 auto-populated from 3B is excess to the extent of 20 rupees taxes. Payable calculated on 100. So excess tax, whatever coming out, you should go for refund.
This is the one part of the story which I communicated to all of you. Let's reverse the situation. The 3B is correct. You picked up 100 in 3B, but you made mistake in GSTR1. Possible, right? So let's say you made 80 rupees or 120 rupees in GSTR1, but 3B is correct. So how to correct it? If 80 rupees coming in GSTR1, then table 4 getting auto-populated with 80 rupees. So what you need to do, you need to edit editable field in table 4, make it 100. So that corresponding tax payable is corrected in table 9 on 100. Tax you have already paid on 100 rupees, which is auto-populated from 3B, getting match. Reverse case, you made 120 in GSTR1, auto-populated in table 4, 120. You need to correct it to 100, otherwise tax payable will be shown on 120. So unless you correct it, it will not be correctly shown in table 9 tax payable on 100 and then getting matched with the tax paid in table 9, which is auto-populated from GSTR 3B. There's a simple one story on outward supply. Look at now difficult, which is the question which is hanging around, and we all are looking for the answer. Let's say you have treated any transaction as intrastate. Then you must have charged CGST and SGST. And you have paid CGST and SGST. But when you're doing this audit, you come to know this is interstate supply. IGST should have been charged. So what is the correction you're going to suggest to the client? Your responsibility, not a certification work. I said it's not a certification work, and may be possible that client has treated this transaction intrastate, charged CGST and SGST, whereas transaction as per you is a interstate, IGST should have been charged. What is the correction you are going to suggest to the client? Correction H. And these are the things, value addition, which client would be liking. And then they will take your cognizance, your presence, that you guided them in a correct way and change their process for way forward, future time period. And that will give you a platter of long-term relationship. Driver giving newspaper, mineral water and juice, not much worthy, but created the client confidence and satisfaction. Similar is the way this connection of GST audit coming in, and you're advising client, giving a platter of long-term relationship with the client. So I'm just connecting this issue to make it a long-term perspective. How to correct it? So you have charged CGST and SGST. So table 4 going to be auto-populated from GSTR1 as a CGST and SGST, whereas transaction is IGST. What I'm going to do, I'm going to correct table 4 because I have not corrected my GSTR1 neither in 18-19 nor in April 19 to September 19. While filing 9 and 9C, I need to correct it. What I'm going to do, I am going to correct my table 4. I will remove this transaction from CGST and SGST liability and put under IGST liability. If I put under IGST liability under table 4, corresponding tax payable getting generated in table 9 for IGST. And table 9 is getting auto-populated from 3B with the wrongly paid taxes CGST and SGST, which you corrected now. So that will become excess paid. So whatever you have excess paid, you will go for refund of CGST and SGST. And IGST, which you corrected, now it is payable. So pay this liability. And where from these provisions are coming in, which I'm suggesting to you, it is coming from under section 77 or read with section 19 of IGST Act. 77 of CGST, read with section 19 of IGST Act. Two questions here. The first question, if I'm paying IGST now,
whether interest is leviable. The first question, no interest leviable. As per 77 subsection 2 of CGST Act, read with section 19 subsection 2 of IGST Act. Can I go for refund of CGST and SGST which I wrongly paid? Yes, you can go for only question which is coming in the market. Whether 2 years limitation is going to be applicable under section 54. So let's take this example that it was mistake made in April 18. Due date of payment of April 18 was 20th May 2018. You paid CGST, SGST on 20th May 2018. Today on 5th of September 2020, you are correcting the transaction. So you're going for refund of CGST and SGST which you paid on 20th May 2018. Can you go for refund because it is beyond 2 years period of limitation? My answer is yes, you can go for refund. For simple reason, you're entitled to go for refund of CGST and SGST which was wrongly paid only after payment of IGST liability. So you become eligible to go for refund only after payment of IGST. So 2 years time period at most it will start payment of IGST liability. Need to be corrected. So what is your take? Are you going to rely the data which is provided by client to you in GSTR 1 and 3B as a intra and inter? And you will continue to do that and certify as it is? Look at the business opportunity. Maybe you can pick up the number, check the number, reconcile the number and sign off. And you never get into their transaction of checking, test check, intra and inter. Maybe it would be taking your time. No denial. But once you check it, test check basis, correct it and fix their system for the future time period, client will always be telling you, sir, you remain in the system. I want you that you should review my GST return and everything. Coming to the last component of outward supply of 17-18. Spillover effect. We all are struggling with. And how to reconcile with GSTR 9C. That's what we all are looking for, right? Let me take this example and explain to all of you how beautifully you can really show the spillover effect of 17-18 in 18-19. Let's take an example that 20 rupees turnover of 17-18 you have shown in a period of April 18 to March 19. Had it been the case, then you would have captured this transaction in table 8C and table 10 of GSTR 9 of 17-18, 20 rupees. 100 rupees book turnover of 18-19. So what happened? Your table 4 going to be auto-populated with 120 inclusive of 20 rupees of 17-18, right? Corresponding tax is also being paid through 3B. Table 9 will also show that taxes paid on 120 rupees, which includes 20 rupees of 17-18. The big question which is debated in the market, where to show this 20 rupees spillover effect of 17-18? I created two categories. Category 1, those who are filing GSTR 9 and 9C, whose aggregate turnover is more than 5 crore. What they should do, they should not make any change in their GSTR 9. Let it be 120 inclusive of 20 rupees of 17-18. Let it be. Do not make any correction. When we go to GSTR 9C table 5, my book turnover as per audited financial statement would be 100 for 18-19, and GST turnover carry forward from GSTR 9 would be 120 because I did not correct it. Difference of 20 will come. I want that difference must come, that I will disclose in table 6 as a reconciliation item, that this 20 rupees turnover was pertaining to 17-18 shown in 18-19 time period. 9 and 9C connected. Those who are filing 9 and 9C together, but those who are only filing GSTR 9, what is way forward for them?
my suggestion would be, you keep the number as it is. Do not do any correction. First part, it is getting auto-populated. Table 4 is getting auto-populated with 120, includes 20 rupees of 1718. Do not do any correction, left it as it is. Second, auto-populated with 120, edited to 100 rupees. So there would be difference of 20 subject to reconciliation. Even the first scenario where you did not do any correction, reconciliation to be made. Second situation is also being created to you. What you need to do after filing GSTR 9 of 1819, you prepare one letter and you send this letter to your jurisdictional GST officer, intimating with one paragraph. And with this letter, you attach GSTR 9 of 1718 and 1819 both together. Explain to the authority, sir, this 120 which is getting auto-populated, we have not made changes, but which includes 20 rupees of 1718, which can be verified with table 8C and table 10 of GSTR 9 of 1718 attached herewith. If you have made an amendment, you have edited to 100, say that 120 auto-populated, now corrected to 100 for 1819 turnover. 20 rupees differential which was of 1718 shown in 1819 can be checked and verified with a GSTR 9 copy of 1718 attached herewith. This is how you can show spillover effect of 1718 to be shown in 1819. What happened to ITC? Input tax credit. Let's take input tax credit and discuss. See that book credit versus 3B credit versus 2A credit. These are the three documents before us. So when we look at book credit, that is the reliable number. That is the credit available to me. Now it can be cross-checked with 3B and 2A. So here also you can do permutation combination and can check the correction in the numbers. Let's say my book credit is 100. My 3B is also 100. Assume hypothetically. There's a figure coming in 2A, 80 rupees or 120 rupees. Let's assume. So reconciliation needs to be done. So what happened? My table 6A getting auto-populated from 3B, 100 rupees getting auto-populated, matched with the book credit. Only difference 2A is showing either 80 rupees or 120 rupees. Had it been 80 rupees, then what happened? Table 8A auto-populated with 2A showing 80 rupees. Table 6B, which is 80, auto-populated in table 8B, it's 100. It looks like I have taken excess credit. With excess credit available, possible, my supplier might have recorded my transaction as a B2C, not as a B2B. It is not getting auto-populated. Might be my supplier has paid the taxes through 3B, but not filed GSTR 1 or not recorded my transaction GSTR 1, hence not reflected in 2A. So even though 2A showing lesser number is not guiding factor. Guiding factor would be what is the credit available in terms of section 16 subsection 2, and that is being taken in 3B or not. Take the reverse example where you took credit of your 2A showing 120. You have taken credit of 100 as per your books of accounts in 3B. So 20 is coming excess in 2A. That may be on account of number of other region. Number of other region may be the transaction of some other party is being shown in your GST number, or that is the credit under section 17 subsection 5, which is not available to you. You have not availed in 3B, but that is coming in 2A. So reconciliation need to be made. That's what I'm guiding you. If I reverse the case, reverse means 2A 100, book 100. 3B you have mistaken. Maybe you have taken 80 or 120.
book credit 100, 2A is 100, 3B mistake 80 rupees or 120 rupees. If 3B 120 rupees auto-populated with 120 rupees, but you're eligible only for 100 rupees. What happened? Reversal need to be done. Under which table you will do? 7H, reversal. Reversal, when you create reversal under table 7H, tax payable created in table 9, pay with DRC 03 with the interest leviable. If it is utilized, then interest leviable. Otherwise, interest is not leviable. So credit wrongly availed and reverse because you have not utilized the same. No interest. Interest is leviable only when you're utilizing the same. What happened in case of 80 rupees? 2A showing 100 rupees. 3B showing 80 rupees. If you go to table 8A of GSTR 9, 100 rupees, 8A. 8B would be showing 80 rupees. 20 rupees credit you could have claimed, which you may have missed. So what happened for the time limitation, section 16, subsection 4? With the credit is available because as per section 16, subsection 4, earliest up to date, due date of September following the end of financial year 18-19 for furnishing return under section 39, which is 3B. I'm not going in debate of Gujarat High Court, 20th October 2019, or date of filing annual return, 30th September 2020. So if you have missed to avail credit and that date is gone, so that would be another Pandora's box. As per my deliberation, you can check my YouTube channel. I have uploaded that as per me, that time limit of section 16, subsection 4 is not applicable. And I can avail credit even today. That I've said, but here the time pause I'm not going into because 7 minutes left. I'm not just touching. You can check my video on my YouTube channel. Per se from my side, credit available subject to litigation. If credit is available, I will advise you to change your table 6B number. Make it 100 from 80. Let difference remain. And we want to litigate the matter to avail the credit of 18-19 even today. Now coming to the wrong credit taken. You have taken credit of CGST and SGST, whereas it should have been IGST credit. Possible, and lot of taxpayers are struggling with how to show this transaction. Lot of taxpayers are struggling with. So in case you have shown credit as a CGST and SGST, which is wrongly taken instead of IGST, that is going to be auto-populated in table 6A as a CGST and SGST. What you should do, per my advice, which I am telling you, you do one thing, you remove CGST and SGST credit and take an IGST column. Do the interhead adjustment in GSTR 9. And why I'm suggesting to you, because 3B of that period, you can't revise. You can't revise and do the correction in the current month 3B. Do this correction in 3B now so that data can be reconciled and matched. With this process, what happened? You have rightly availed IGST and reversed wrongly availed CGST and SGST, where the interest is leviable. To my mind, as per my humble opinion, I can always continue to argue no interest on similar line when I've charged wrong taxes, CGST and SGST instead of IGST. It is only interhead adjustment, which I wrongly did. This was mistake on my part. Had revision option was available, I could have corrected. But now since time gone, I'm correcting in GSTR 9 and correcting the same in the month September 2020. Coming to the last component, 1 hour is the time period which I have taken from Arunji, and I've got my further commitment as well. So last of RCM liability, reverse charge method liability of 18-19 or 17-18. I didn't pay. Now we are coming to know this RCM is liable.
With an example, let's say advocate raising invoice on 1st January 2019, part of 1819 liability. My time of supply as per 13 subsection 3 of CGST Act is 61st day, earliest up to date. Date of payment by the recipient or date following the end of 60 days. You didn't make the payment to the advocate. Time of supply is already there by 61st day, which you didn't pay. What you should do today? Two scenarios available to you. Scenario number one, either you show the liability in table 4G, create tax payable in table 9, pay by DRC03 along with interest, because TOS, point of taxation, has already arisen in the past. Scenario number two, a press release got issued on 3rd July 2019, categorically saying that you must show your RCM liability in the relevant year where you are paying the RCM liability, because you are availing credit in that particular year. So RCM liability of 1718, 1819, you can show in September 2020. GSTR 3B, table 3, and table 4 avail the credit in this month only. You will pay along with interest because of TOS has already been arisen. But credit is available because if you have taken this RCM services from unregistered supplier advocate, then what happened? You need to create self-invoice to yourself as per section 31, subsection 3, clause F. And this self-invoice generated would be the eligible document for you for availing credit on payment of tax as per Rule 36, Sub-Rule 1, clause B. So even 1718, 1819 liability self-invoice generated today, you can pay, and that self-invoice would be eligible document and available as a credit subject to payment of tax, of course with interest as per TOS provision, point of taxation provision. Only non-compliance would be that you have not raised self-invoice in time-bound manner. You should have raised this self-invoice in the month you received the services as per 31 subsection 3 clause F. So what you need to do in this given situation for non-compliance, for not raising invoice in time-bound manner, penalty, general penalty going to be leviable, but credit is available. And press release simply saying that you should capture this transaction in the year where you are paying the taxes to avail the credit. You may follow this mechanism. Coming to the last conclusion part. Being GST auditor, you carry a responsibility to ensure that whatever informations are true and fair as against true and correct, it got substituted. Lot many fields are made optional by notification number 56/2019. As a GST auditor, my first take would be you should take GSTR 1, 2A, 3B, books of accounts of all GST number and consolidate it. Even you take of 1718 as well, because spillover effect can be explained with 1718 GSTR 9 and 9C only. Take everything into consideration. So first take, it is not a certification work. Second, there may be a correction required in terms of ITC, which is available. Client may have taken credit in 3B, but that is not available to him. Unless you go into detailed part of it, you will not be able to diagnose the same. So what I'm telling you, my dear friend, don't pick up the number as such what is being shown in 3B or GSTR 1. Do diagnosis. Diagnosis is not a certification work. Coming to the third component, even the rate applied on the product. Maybe client has taken 5% GST rate, which is otherwise taxable at the 12% rate. Sanitizer, happening issue, 12% versus 18%. There may be a similar dispute in the past period of 1819. Are you only going to pick up the number from 1 and 3B and reconcile? No, that is not the responsibility. You need to capture GSTR 9C, table 9, table 10, table 11 to properly picking up the rate-wise liability.
Is it the responsibility of GST auditor? To my mind, yes, it is the responsibility. If you're only picking up the number from 1 and 3B and just matching BRC, bank reconciliation, then this is not the GST audit we are talking about. GST audit is something different which we are referring to. What I'm saying, GST audit is something other than certification. It's a diagnostic work. You need to really collate the data. And after collating the data, you need to check everything. Deemed supply concept, Schedule 1. Supply of goods or services between related person or distinct person in the course of furtherance of business, even though without consideration, may not have been captured in GSTR 1 and corresponding liability in GSTR 3B. Are you supposed to capture this transaction? As per law, yes, you're supposed to. You have to check those transactions. Treatment of credit note and debit note. Credit note under GST, credit note without GST, financial credit note. Lot many things I could have carried on and telling you the implication. These are the important aspects. And you can come back and then say, Bimal ji, with 20,000 rupees, do you want me to check all this thing? Then tell your client what fees you're looking for. But do justification. Believe me, the driver who has given me a car at 5 o'clock in the morning, which is clean car, hygienic, newspaper, mineral bottle, juice bottle, differentiation in its service. If you can differentiate in your service, you will be priced accordingly. If not now, then for the future. Maybe if you have taken contract for 20,000 rupees, not a worry, but do real part which is expected from us, and that will create platter for you for the future period, because that client would be happy with your work. And I'm sure, and this is my experience which I'm sharing with you, that once client is satisfied, you can always convince him to increase the fees component. Fees comes up on the satisfaction. Otherwise, samosa of Agrawal and Haldiram, why different? Why we pay 50 rupees or 75 rupees for one samosa of Haldiram versus 10 rupees of Agrawal samosa? For simple reason, create differentiation. You carry a lot of responsibility when you sign. Your signature has got one value. That value is invaluable value. Price it properly. Do not make it like, certification work. I'm not advocating. Being GST auditor, lot of responsibilities. But what we are doing, we are selling out this certification work in the name of certification work, giving the signature, not earning properly, not pricing properly. Please don't take such work. What happened at most? Work will go away. Not an issue. But create your picture in the mind of client that this is genuine service provider. He will price it and he will give me the service which I'm looking for. Create a differentiation. Once difference created, I'm sure it is going to help you all. And that's what I follow in my career, in my endeavors. I thought of creating these many points for you for intricacies and preparation for GST audit. And I connected this topic with one motivation story of the driver. Hope you have liked that motivation story of a driver with our profession when we are serving to our client. Be unique, special, distinct, and have content that will fetch you the price which you are looking for. That is my summary. Thanking Arunji inviting me on his podium for giving this deliberation, and thanking each one of you, those who are participating and they are listening to me. Hope they must have liked it. I would like to get their feedback in chat box, at least within the time frame given to me. I have tried to take not many examples, gave the example, given my explanation. I'm sure that you have really liked the point which I deliberated today. Thanks for listening and watching me. मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली शेयर द फीडबैक, काइंडली शेयर द डिस्कशन जो भी आज हुआ.
Aditya Niburani saying that सर वो आपसे बोल रहे हैं अरुण जी, आपने अभी तक बुक नहीं निकाली है, भगवत गीता का वो वेट कर रहे हैं। आज अरुण सर आपकी किताब सफिशिएंट है, मैं तो जिसको भी बोलता हूँ सर किताब परचेज कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। इवन वी आर स्टिल लर्निंग फ्रॉम योर बुक्स ओनली। No, that's great part of it because you're acknowledging the fact that this is what we are learning from each other. No one is teacher. I said in the beginning and I'm reiterating once again, no one is teacher. मैं तो सर फ्रैंकली सभी को बोलता हूँ, मेरे लिए अगर कोई फर्स्ट जीएसटी गुरु है, नॉट बिकॉज कि जस्ट आई एम ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं सबको ओपनली बोलता हूँ, तो दो चीज अगर मुझे विमल सर से मिली है तो जीएसटी सीखने या स्टार्ट करने का जो बेसिक मेरे लिए गॉड फादर कह सकता हूं मैं। सेकंड, अगर मैंने ये सबसे बड़ा डिसीजन लिया है कि नौकरी क्विट करके, सर्विस क्विट करके, आफ्टर ए गुड अमाउंट ऑफ द टाइम, 10 year आई स्पेंड इन द सर्विस एंड देन आई स्टार्टेड द प्रैक्टिस, उसके लिए मैं सभी को बोलता हूं, अगर किसी के लिए गाइडिंग फैक्टर हो सकता है तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो टू द लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ द सीए बिमल जैन सर। काफी मेरे लिए बूस्टिंग फैक्टर था, शायद काफी लोगों के लिए होगा ये। दिस इज फैक्ट सर, दिस इज रियली फैक्ट सर। अरुण जी, ये आपका यू आर वेरी जेनरस which you are acknowledging on your platform, but I'm still telling you that none is teacher. We all are learning from each other, and once we are a student we will be alive forever. जिस दिन हम टीचर बन गए ना, उस दिन हमें ऊपर वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। So let me be student also, and let me the part of learning throughout to the last breath of my life. That's what I would be looking for. अगर आप टाइम परमिट करें सर, 4 या 5 क्वेश्चंस पिक कर ले सर। हाँ जी, बिल्कुल ले लेते हैं, फटाफट ले लेते हैं। सर प्रदीप सर का क्वेश्चन है, सब जानना चाहते हैं सर, ये जानना चाहते हैं कि कैसे याद रखें, क्या करें नहीं करें। ऐसा एक चीज बताऊं प्रदीप जी, कोई गुरु मंत्र नहीं है। अगर जूस मेरे पास होता तो बना के मैं दे देता अभी आपको कि जूस पी लो, आपको हमेशा याद रहेगा। इसके लिए तो आपको लव एंड पैशन। मैं तो एक छोटी सी एक दो मिनट की बात करता हूँ। जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं ना, तो कई बार किसी लड़की को अच्छी तरह लाइक करते हैं ना, तो जब लाइक करते हैं तो क्या करते हैं, दिन भर उसके पीछे पड़े रहते हैं, सुबह शाम रात दिन। उसी तरह से जीएसटी में जिस दिन आपको प्यार हो जाएगा ना, सुबह शाम रात दिन, फिर आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि कब नोटिफिकेशन आया, कब सर्कुलर आया, आपको अपने आप मालूम रहेगा, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं ना। रात को 12 बजे भी मैसेज आएगा तो रिप्लाई करते हैं ना, वैसे ही सर्कुलर आएगा तो आपको ठीक मालूम पड़ जाएगा सर्कुलर आया है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। What happen if advocate is registered, issued invoice, can we take credit sir? एडवोकेट फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों रजिस्टर्ड होगा एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मुझे वो सिनारियो समझ में नहीं आया। लेकिन आपने चूंकि अब सिचुएशन बना दी है कि एडवोकेट रजिस्टर्ड है, तो नॉट एडवोकेट मे बी अदर सर्विस प्रोवाइडर वो रिवर्स चार्ज में आता है, वो रजिस्टर्ड है, तो उसने तो इनवॉइस रेज कर दिया होगा। जब उसने इनवॉइस रेज कर दिया होगा देन 16(4) का एक लिमिटेशन आ जाएगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं 16(4) की टाइम लिमिटेशन के साथ नहीं जा रहा, मेरे हिसाब से क्रेडिट मुझे मिलेगी। तो आरसीएम बाय रजिस्टर्ड सप्लायर हो या अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज का भी अगर सप्लायर है तो 16 सबसेक्शन 4 की लिमिटेशन को मैं नहीं मान रहा। आप मेरा वीडियो माय यूट्यूब चैनल पे है, मैंने उसमें जस्टिफिकेशन और लीगल आर्गुमेंट रखे हैं, देखिए। आज टाइम कम था इसलिए मैंने नहीं किया, बट टू माय माइंड क्रेडिट इज अवेलेबल। ओके, फॉर माय पार्टिसिपेंट आई कैन से दैट वो जो बिमल सर का जो वीडियो है जिसका सर डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मैं सर का लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा, यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट वीडियो फॉर ईज। आई होप सर इट्स परमिटेड सर। ऑफ कोर्स परमिटेड। इसमें देखिए, ये मैंने अभी कहा ना, सबका साथ सबका विकास। हम लोग को क्या करना चाहिए, एक दूसरे का ऑलवेज साथ देना चाहिए। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, लर्निंग की पहली परिभाषा है कि भेदभाव करना बंद करो, राइट, एब्सोल्युटली, डिफरेंस करना बंद करो कि मैं बड़ा तुम छोटा, तुम बड़ा मैं छोटा, हम सब बराबर। तभी वो जो पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट होती है ना, सिनर्जी जो क्रिएट होती है, वो तभी क्रिएट होती है जब हम एक दूसरे को एक साथ एक जैसा समझते हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। भारत एजुकेशन से सर, आरसीएम 1718 आफ्टर फाइलिंग 99C, हाउ मच इज द पेनल्टी? वेयर
we to sue RCM. नहीं, वो तो बोलते हैं where we to show RCM of 1718 after filing GSTR 9 and 9C, or how much is the penalty if you have really paid the liability after filing 9 and 9C. kindly capture in your current month, जिस मंथ में आपने पे किया हुआ है उसमें दिखा दीजिए कि आपने ये पे किया हुआ है। 18-19 में स्पिल ओवर के इफेक्ट में डाल के इसको दिखा दीजिए। ओके सर। आदित्य निबुरानी सर, हाउ टू फाइंड द टाइम? अच्छा, टाइम के लिए मैंने बताया ना, प्यार करना सीख जाइए। प्यार करना पड़ेगा सर। जिस दिन आपको प्यार करना आ गया किसी को, आप जीएसटी, बाकी मेरा प्यार है जीएसटी के साथ। आई ऑलवेज से मेरी सेकंड वाइफ है जीएसटी। तो जब सर्कुलर आता है, तब जैसे आता है ये आपके मोबाइल पे जैसे कोई मैसेज आता है पौ पौ करके चालू होता है, आप इमीडिएट मोबाइल उठा के देखते हैं। ऐसे ही मैं जीएसटी में देखता हूँ, सर्कुलर आ गया, अरे आ गया, अभी रिप्लाई बनाना है, इसका नोटिफिकेशन आ गया, अभी बनाना है। ये जब आपके अंदर जब इस पैशन आ जाएगा ना, फिर आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे करना क्या है। ये वैन परचेज फॉर कंपनी टैक्स पेड इन वैट पीरियड, फाइल ट्रांजिट फॉर्म 1, claimed ITC of 50% VAT and GST period। अगर आपने ITC क्लेम किया है और ट्रैन 1 के जरिए आपने कैरी फॉरवर्ड भी कर लिया, अगर आप उस वैन को बेचेंगे तो आपको जो प्रोविजन है कैपिटल गुड्स के ऊपर 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ ITC to be reduced to the extent of period of use or on transaction value whichever is higher you need to follow। मार्जिन मेथड फिर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मार्जिन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज जहां आईटीसी क्रेडिट नहीं ली गई है। सर, 2 to 3 फीडबैक आई लाइक टू रीड इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज नॉट एन इशू। और आपने अपने बारे में भी पढ़िएगा। मीनाक्षी, थैंक यू वेरी मच। नाइस स्टोरी relate to our specialization। Thank you। It's one of the best class, I guess। Absolutely Ritu ma'am, I fully agree with you with such a great example। इसीलिए तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया था कि एग्जांपल मुझे चाहिए। और सर आप विश्वास नहीं करेंगे, दैट इज अ ग्रेट ऑसम, आई कैन से द क्वालिटी। आप स्टोरी को प्रोफेशनल के साथ लिंक करके वापस स्टोरी के साथ जब लिंक करते हैं ना, दैट वाज रियली रिमार्केबल सर। नहीं, कुछ नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत अरुण जी आप लोग को बहुत अच्छा लगता है इसलिए कैरी ऑन कर रहा हूँ, वरना स्टोरी बोलना स्टार्ट क्यों किया मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कब से स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया। और वो आज स्टोरी चल रही है क्योंकि आप जैसे कई फ्रेंड हैं, दे आर आफ्टर मी एंड दे ऑलवेज टेल मी कि बिमल जी स्टोरी मस्ट कंटिन्यू। दैट इज गिविंग अस लाइफ एंड होप द वे टू लुक एट द फ्यूचर। मेरे लिए भी यही है कि आप लोगों को अच्छा लगता है इसलिए मैं कैरी ऑन करता हूँ। ऑलवेज जो मेरे अंदर है मैं चाहता हूँ मैं उससे ज्यादा आपको दे दूं। मेरी तो ऑलवेज प्रे विश यही होती है और प्रभु से ये बोलता हूँ लेके तो कुछ नहीं जाना, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है, तो दे के जाओ, जो भी जाना है दे के जाओ। Correct, sir। So thank you very much, sir। Thank you very much for your valuable time। Thank you very much to each one of you, Arun ji, Pooja ji, and all the participants, and such a lovely feedback, such a lovely, your generosity, motivation. Thanking each one of you. Be part of my, motivation at all times.